we start. Let me share the whiteboard. ओके तो हम कर रहे थे ये लाइंस ऑफ कर्वेचर्स की बात, फिर हमने उसका रोड्रिग्स फॉर्मूला किया, वो सेटिस्फाई होता है, then the curve has to be a line of curvature. Now we come to an important class of surfaces and we call them surfaces of revolution. Okay, surface of revolution होता है, suppose मैं अपनी 3-dimensional space में हूँ, of course, and let's call this xyz axis. So if I have got a curve, see in yz plane या जो भी हमारा plane होगा, so then I suppose rotate this curve. We rotate this curve, the whole curve. I have got a given curve which is continuous, regular. So we just rotate it about z axis, so it would generate a surface, sort of a cylindrical type surface. तो यहाँ ऐसे है, तो यहाँ ऐसे ऐसे ऐसा कुछ बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं surface of revolution. सबसे simple example, if I take a straight line, straight नहीं है, if I take a straight line parallel to z axis and I rotate it, and you know that what I would get by rotation, I would get a cylinder. So cylinder is also a surface of revolution, simplest. Or if I take a line that cuts, passes through the origin and rotate it about z-axis, right? So this would automatically generate a surface, the cone. Or better still, if I take a semicircle, like this and rotate it about z-axis, what I would get would be, but it would be a sphere. So in general, I could have any curve. If I get, for example, if I have a hyperbola in this manner, so if I rotate it about this axis, the z-axis, I would get this surface, the hyperboloid of one sheet. And suppose if I take the same thing and rotate it about this axis, so I just rotate it about this axis, I will get this surface, which would be in two pieces. जिसको हम कहते हैं hyperboloid of two sheets. So basically, you're rotating, and that curve goes through a region in space, and that space becomes a surface of revolution. Just like if I let a point rotate about a axis, so it would be a circle, and if I let a curve rotate, so it would be is sort of an amalgamation of those circles, which would generate a surface. जिसको हम बोलते हैं surface of revolution. Now, so we want to derive an equation for general surface of revolution. By that I mean I've got a given curve, and I want, if I rotate it about a certain axis, I want to find what would be the equation of this surface of revolution for any curve once I rotate it about an axis. And we call that general surface of revolution. So when a plane curve is rotated about an axis in its plane, when a plane curve, let us define it, is rotated about an axis in its plane, जहाँ पे ये plane में है, ये defined a curve,
in its plane, the surface generated in this manner, the surface generated in this manner is called the surface of revolution. Now what we do, just to derive this equation, so I take my axis जिसमें मैं rotate करूँगा किसी curve को. So let this be a curve. Let's call this x z plane, and this is my y-axis, and I rotate it about z-axis. Usually we take this to be our x coordinate and this y, but here for our convenience, so that we can derive the equation of the surface of revolution easily, तो इसलिए हमने थोड़ा axis के नाम बदल दिए, although that doesn't matter. Okay, because we are interested in properties that do not depend upon where the surface lies within the three-dimensional spaces, and what do we call x-axis, y-axis, and z-axis, right? We're interested in curvature and other things, and they do not depend upon our choice of axis. Okay, so once I've done that, I take my curve, जो भी मेरी curve है जिसको मैं rotate करना चाहता हूँ, suppose this curve, right? I take it in xz plane. ठीक है? Okay. Now, if we take the axis of revolution to be z-axis, if we take the axis of जहां से हम इसको घुमाएंगे जिसके around axis of revolution to be z-axis and a plane curve and yeah ऐसे देख लो now and let yeah यहाँ देख लो if मतलब we take the axis of revolution to be z-axis, let the parametric equation of the plane curve in the plane y equal to 0. Y equal to 0 means कौन सा plane? ZX plane. यानी जिस plane में मैंने इस curve को दिया, be given by, अब अगर ZX plane में है, उसकी parametric equation उस curve की होगी x coordinate would depend upon some way in on the parameter u, say u, and y would be of course 0. Of course z would also depend in on some parameter. Let's call it f of u. So in this manner, I have defined a parametric curve with its x and z coordinates, of course, inside ZX plane. Okay, now suppose I rotate this curve. ये कहीं यहाँ पहुंच जाएगी, इसके पीछे है ना, अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ इस तरह से, suppose say through an angle phi. तो मैंने इस कर्व को रोटेट किया through an angle phi about z-axis. Right? So let me write that down. So now if this curve be rotated about the z-axis, now if this curve be rotated about z-axis through an angle phi, then the coordinates of the point are given by, इसके coordinates क्या होंगे? Let's see. Okay, अगर मैं पहले इसका x coordinate क्या है? HU. अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ, ये जो लेंथ है ना, ये है मेरा h of u.
ठीक है। अब अगर मैं एच ऑफ यू इस पॉइंट को रोटेट करूं, इज इट ये इट वुड लाई ऑन अ सर्कल, राइट, विद रेडियस एच ऑफ यू। यानी यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट होगा दैट वुड बी, जो अगर हमारे पास रेडियस पता है तो हम सर्कल, मतलब इट वुड बी जस्ट लाइक दीज सर्कल्स ना ऑफ डिफरेंट रेडियस। और डिफरेंट कैसे वो होगा, बिकॉज एच ऑफ यू के इज नॉट अ कांस्टेंट। अगर एच ऑफ यू कांस्टेंट हुई तो देन इट विल बी अ सिलेंडर। नाउ एच ऑफ इज अ फंक्शन, सो वी विल गेट डिफरेंट सर्कल्स ऑन दिस सरफेस जो जनरेट होगी इस तरह से, तो जिसकी रेडियस होगी गिवन बाय द फंक्शन गिवन बाय द एक्स कोऑर्डिनेट, बिकॉज आई एम रोटेटिंग अबाउट z एक्सिस। सो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, ऑफ कोर्स इसका एक x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन z कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज एज यू कैन सी, क्योंकि z कोऑर्डिनेट जो यहाँ था, इसको रोटेशन से जो हाइट है, जब मैंने इसको रोटेट किया ना इसको थ्रू एंगल फाई, तो इसकी जो हाइट है z से वो सेम रहेगी। यानी इसके कोऑर्डिनेट्स जो भी होंगे, z वुड बी एफ ऑफ यू, और इसके जो x एंड y कोऑर्डिनेट्स हैं, दे विल लाई ऑन अ सर्कल विद रेडियस h of u। सो उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए h of u cos of phi, ऑब्वियसली h of u sin of phi। ज्यादा मुश्किल नहीं। तो इसीलिए मैंने यहीं पे लिखा था कि मुझे जब पेज बदलूं तो तुम्हें वो समझ आया मैंने क्या लिखा, क्यों लिखा। ओके, सो so then the coordinates are given by x equal to h of u cos phi, y equal to sine of u, sorry, h of u sine of phi, and z will not change, that is f of u। Of course अब दो पैरामीटर्स आ गए, where phi would lie between of course 0 and 2 pi, जब पूरा रोटेशन होगा फिर से वही रिपीट होगा, or I can just leave 0 or 2 pi, doesn't matter। So I have got now, जो मेरी surface है, as I can see it, इस तरह से ये जनरेट हो गई रोटेट करके, so it would be a generalized cylinder type। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट जो होगा x y z, it would satisfy that x is equal to hu cos u, sorry, hu cos phi, hu sin phi, and z is equal to f of u। And f of u is the equation of my curve in my, मतलब मेरी जो इक्वेशन है प्लेन कर्व की, वो थी मेरी एक्स जेड प्लेन, और ऑफ कोर्स एक्स जेड प्लेन एक्स कोऑर्डिनेट था इसका, जो मेरी कर्व थी इसका एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट पे है एच ऑफ यू, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है एफ ऑफ यू, नहीं जेड कोऑर्डिनेट इन दिस केस, क्योंकि मैंने इसको जेड एक्सप्लेन किया। Okay, so that means if I know this curve, if I know this curve, I know the equation of the surface by this formula। So एक तो है जो पैरामीटर इस तरह से जाएगा when u changes, and of course I get different points on this curve, so I would be going along this curve, and when phi changes I would be moving along circles on this surface, right? यानी मेरा जो phi है वो यहाँ वेरी करता है, और मेरा जो u है वो along these lines वेरी करेगा। तो इनको हम पैरेलल्स बोलते हैं इन कर्व्स को, और इनको हम बोलते हैं मेरिडियंस। Meridians are basically a rotated version of our generating curve, जिससे हमने इसको जनरेट किया। अब फॉर कन्वीनियंस सेक व्हाट वी डू, वी से नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास कोई फंक्शन हो x is equal to f of u, right? नहीं, sorry, x is equal to h of u, we could have also written our curve z is equal to f of u के बजाय I could have written z is equal to f of x। ऐसे भी तो इस कर्व को लिख सकते हैं जैसे हम लिखते हैं ना y is equal to f of x। इस कर्व को z is equal to f of x भी लिख सकते हैं, because y की जगह z है, right? Then I can treat, if I take x to be u my parameter, and z would be then f of u। So I can actually, for convenience sake,
we take, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए for convenience sake we take h of u to be u. मतलब यही है, बजाय पैरामेट्रिकली लिखने के we write that in terms of y is equal to f of x type, z is equal to f of x type. उस तरह से भी हम कर्व को लिख सकते थे, लेकिन तब हम इसको इतना इजीली डिराइव नहीं कर सकते. once we have done that we can revert back so that the position vector uh, at any point on the surface of revolution becomes r is equal to, एक तो पैरामीटर है कर्व का u, दूसरा मेरा रोटेशन का पैरामीटर है phi is equal to u, ठीक है, u cos of phi, u sin of phi and f of u, where f of u is my generating curve. So we usually now changing phi का नाम to v, क्योंकि usually हम uv लेते हैं पैरामीटर. So we get the equation of the general surface of revolution generated by the curve. Do I have? I've got z is equal to f of u, right? By as हम लिखेंगे इसको r is equal to r at uv, that is equal to u cos v, u sin v and f. Okay. Okay. So where of course v पे condition है, v parameter lie between 0 and 2 pi. अब u parameter डिपेंड करेगा कि हमारी कर्व कौन सी है, तो वो डिटरमिन करेगा. For example, if I had taken u to be my semicircle, I could have taken u to be my semicircle in zx plane. So I could have taken u to be my, f of u to be my semicircle. So let me, तो अब हमारे पास जनरल सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है, r is equal to r at uv is equal to u cos v, u sin v, f of u. And I could have taken my x and z coordinates. ये जो मेरा इस तरह से अगर मैं एक सेमी सर्कल लूं, राइट, और इसको मैं एंगल बना दूं यहाँ पे फाई, तो ये जो मेरा x और z एक्सिस में मेरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बनेंगे, ऑफ कोर्स x कोऑर्डिनेट होगा cos ऑफ फाई और मेरा z कोऑर्डिनेट होगा सम cos ऑफ थीटा, चलो, और z कोऑर्डिनेट होगा sin ऑफ थीटा, where theta lies between 0 and 2 pi, नहीं 0 and pi, क्योंकि मैं सेमी सर्कल ही ले रहा हूँ. और अगर मैं इसको रोटेट करूं, I would get a sphere. Okay, of course I am assuming that radius is 1, है ना, वरना मैं रेडियस को मैं 1 मानता चाहता हूँ जस्ट फॉर सिंपलिसिटी सेक. तो ये इक्वेशन बन जाएगी. अब मेरा जो x कोऑर्डिनेट था यहाँ पे वो आ जाता कुछ, लेट मी कॉल इट cos ऑफ थीटा. मैं बजाय इसके क्यों ना cos ऑफ u कहूँ, थीटा को पैरामीटर, ये आएगा sin ऑफ u. सो u would lie between 0 and 2 pi. सो मेरी जो इक्वेशन होगी फॉर स्फीयर ऑफ रेडियस 1, तो हम उसकी यूजिंग दैट फैक्ट दैट इट्स अ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, इसको मैं लिख सकता हूँ cos of u, cos of v, then I have sin of u, sin of v, and f of u, z is sin of u. मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, cos, हाँ u यहाँ पे लिखना था, सॉरी, ये था मैंने गलत.
एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा, वो कहाँ गया, इरेजर, कॉस ऑफ यू ही आएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ना, जो मेरी सरफेस है उसका जेड कोऑर्डिनेट. सो यू रिमेंबर दिस वेयर यू लाइज बिटवीन ऑफ कोर्स 0 एंड पाई, ये एक साइड से बंद कर सकते हैं, एंड v lies between 0 and 2. So this would be the parametric equation, a nice parametric equation of the a natural parametric equation of a sphere. क्योंकि इसमें u कर्व क्या होगी, u कर्व होगी यहाँ पे, u कर्व होती है जो पैरामेट्रिक कर्व होती है, u कर्व है बेसिकली जहाँ पे v इज इक्वल टू कांस्टेंट. v इज इक्वल कांस्टेंट यानी जहाँ पे ये एंगल चेंज नहीं होता, यानी वो होगी ये वाली कर्व्स जिनको हम कहते हैं मेरिडियंस. तो वो होगी मेरिडियन यानी सेमिसर्कल. और v कर्व होगी जहाँ पे u इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी u चेंज नहीं हो रहा है, मेरे को तो वही पैरेलल्स ये वाले सर्कल जो हम बनाएंगे यहाँ पे. सो दैट वुड बी मतलब इसकी जो पैरामीट्रिक कर्व्स जो ढांचा है दैट्स मोर नेचुरल कि हमने इसको एक ढांचे से खड़ा किया. इसकी पैरामीट्रिक कर्व्स व्हिच वुड बी आल्सो द लाइंस ऑफ कर्वेचर, दे वुड बी म्यूचुअली ऑर्थोगोनल. हम सारा कुछ चेक कर सकते हैं. ओके तो ये एक सर्कल की एग्जांपल से हमने समझा दिया कि कैसे हम वो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन बना सकते हैं. और यू कैन टेक मेनी अदर वेज हम कर सकते हैं. ओके चलो अब मैं लिखता हूँ, ये तो एक एग्जांपल थी बट लेट्स टॉक अबाउट, जो कि मैंने बता ही दिया अभी, पैरामीट्रिक जो इसकी इक्वेशंस होंगी या पैरामीट्रिक जो कर्व्स होंगी ऑन द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन. पहला, द कर्व्स u equal to constant, that means my v curves जैसा कि मैंने बोला u is equal to constant, they are the parallels. That is, they are the intersection of the surface of revolution by the planes perpendicular to the axis. मतलब हमारी जो axis of rotation, the parallels हैं, they are basically intersection of some plane which is perpendicular to z, the axis of revolution of our surface of revolution. So we would get these parallels by that, perpendicular to the axis of rotation. जो हमारे केस में हमने जो चूज किया पैरामीटराइजेशन का तरीका z axis है. Okay, for example, in the case of sphere, parallels are the circles in the planes. Parallels are the circles in the planes parallel to xy plane. In the planes parallel to xy plane. दूसरी इसकी पैरामीट्रिक कर्व होगी जहां पे मतलब v कांस्टेंट होगा. सेकंड, the curves v is equal to constant और phi is equal to constant, हमने इसको इनिशियली phi कहा था, are the meridians or they are the intersection, they are the intersection they are the intersection of the surface by the planes of the surface by the planes going through the axis. Actually वो तुम देख सकते हो, through the axis.
सो अगर आप कौन चाहते हो, you just have to take h of u equal to u and f of u equal to, ये तुम खुद चेक कर सकते हो, u cot alpha, where alpha is some constant. Alpha is basically the semi-vertical angle of that कोण, ये जो यहाँ पे एंगल बनेगा, तो इस तरह का कोण आपको मिलेगा अगर आप ये लोगे. And you check it. Now since clearly, अब अगर मैं देखूं अपना आर एच यू वी क्या था मेरा, जनरल था अपना u cos v, u sin v, f of u, ये मेरी है पैरामीट्रिक इक्वेशन. व्हाट वुड बी आर यू? आर यू होगा cos v, राइट, sin v, एंड ऑफ कोर्स f dash at u. आर वी होगा, आई थिंक क्या डिफरेंशिएट करेंगे, so it would be minus u sin v, u cos v, and 0, because this only depends upon u. So what would be ru dot rv? ru dot rv में इन दोनों का डॉट रख लो, so it would be minus u cos v sin v plus u cos v sin v 0, so it is 0. तो इसमें एक चीज ऑब्वियस है कि इसकी जो पैरामीट्रिक कर्व्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपस में ऑर्थोगोनल हो. तो इसी तरह से मैं चाहूंगा अगर तुम निकालोगे, let me write it down directly, इसके जो फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स होंगे, क्योंकि वो तुम खुद भी डिराइव कर सकते हो. So let me write down कहाँ है मेरा, मैंने तो इस पे ध्यान नहीं किया. ओके, हाँ, तो f0 है, e होगा, तो यूजुअली हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं cos v sin v f1. f1 का मतलब है, f1 का मतलब है f dash at u, इसी तरह से f11 का मतलब हम लेते हैं f डबल डैश at u. मतलब इसमें थोड़ा सा सिंपल करने के लिए तो e जो होगा, जो तुम इवैल्यूएट कर सकते हो, that would be obviously 1 plus f1 square. So g would be simply u square. L would be u f11 divided by h. M would be 0. ये तुम evaluate कर सकते हो. Home assignment. Evaluate the first and second order fundamental magnitudes for a general surface of revolution. तो इसी तरह से एल एन, तो एन होगा बराबर, एन होगा u स्क्वायर f1 डिवाइडेड बाय h, एंड ऑफ कोर्स h स्क्वायर होगा, वो तुम इसी में से निकाल सकते हो, u स्क्वायर इंटू 1 प्लस एफ एन स्क्वायर, और t स्क्वायर होगा, वो होगा u क्यूब f सब 1 f डबल 1 divided by h square. So this is, these are the फर्स्ट से, मतलब जो भी तुम्हारे वो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स होंगे. लेकिन हम सिर्फ एक चीज नोट करेंगे, f इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 0. उसका मतलब क्या होगा, जब f और m 0 हो सकते हैं, सो वी कैन, सो वी कैन चूज, मतलब जो हमारी पैरामीट्रिक कर्व्स हैं, दे आर आल्सो द लाइंस ऑफ कर्वेचर. क्योंकि इफ एंड ओनली इफ होता है वो लाइंस ऑफ कर्वेचर और पैरामीट्रिक कर्व्स, इफ एंड ओनली इफ f and m are both 0, and in the case of surface of revolution that's always the case. So एक रिमार्क हम लिख सकते हैं, लेकिन वो तुम पहले इवेलुएट करोगे ये सारे, तभी तो हमें पता चलेगा. f since f and m is equal to 0, since f is equal to 0 and m is always equal to 0 for a surface of revolution,
Parametric curves are the lines of curvature. ओके, एक चीज ये हुई, इसके बाद हम करेंगे व्हाट आर द प्रिंसिपल कर्वेचर्स, क्योंकि अभी ज्यादा आसान है ना। तो प्रिंसिपल कर्वेचर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो क्या है? दे आर बेसिकली द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एच स्क्वायर के एन स्क्वायर। वी सॉल्व फॉर के एन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी जो दो वैल्यूज मिलेंगे वो होंगे प्रिंसिपल कर्वेचर्स. Now we just evaluate them for the general surface of revolution. Now principal curvatures of the surface of revolution. तो हमें कुछ नहीं करना, बेसिकली ई एफ जी इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, फिर के एन के लिए सॉल्व करना है. ओके, principal curvatures of the surface of revolution. Now any point on the surface of revolution is given by, जैसा कि हमने इससे पहले किया था, r is equal to u cos v u sin v f of u. So again, चूंकि मैंने कहा तुम वो इवेलुएट करोगे, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिखूंगा. पहले तुम आर यू आर वी ये सब निकालोगे, तो ये तुम्हारा होम असाइनमेंट है ही. तो E इज इक्वल टू, तो इवेलुएट करना है, ये सीधे नहीं लिखना है एग्जाम में, ठीक है. 1 प्लस एफ वन स्क्वायर, एफ इज इक्वल टू 0, G is equal to just u square, L is equal to u times f11 divided by h, m is equal to 0, n is equal to u square f1 divided by h again, and of course h square is equal to, इसी से हमें मिलेगा u square into 1 plus f1 square, and t square is ln minus m square, and 0 has simply you have to multiply these two. So that would be u cube f1 f11 divided by h square. ठीक है. Now equation of the principal curvatures is given by, substituting these values. In the equation of the principal curvature, जो मैंने ऊपर लिखी थी, h square k sub n minus en plus gl minus twice fm k sub n plus t square is equal to 0. अब fm तो खैर 0 है, तो हमें इन तीनों को सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमें मिलेगा, let me write it down, हमें बेसिकली मिलेगा u square into 1 plus f1 square k sub n square minus 1 plus f1 square u square into f1 divided by h plus u cube into f11 divided by h whole multiplied by kn. Then I have plus u cube f1 f11 I think divided by h square. This is equal to 0. So basically what we're trying to say कि अगर हमें f पता हो तो हम निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे प्रिंसिपल कर्वेचर्स. तो दैट्स वी वांट टू अराइव, जहां हम पहुंचना चाहते हैं. तो पहला स्टेप तो ऑब्वियसली होगा कि हम h स्क्वायर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे. सो व्हाट डू यू गेट? यू विल गेट h स्क्वायर u स्क्वायर into
1 plus f1 square into kn square minus h आ जाएगा क्योंकि h ऑलरेडी था एक 1 plus f1 square into u f1 plus u cube f11 times kn plus u cube into f1 f11 is equal to 0. Now you have to remember what is f1. F1 is f dash at u and f11 is our symbol called double derivative of f with respect to u. अभी खोना है इतनी देर number 33. Okay, so as we can see, what can we see? तो हम h का भी वैल्यू देंगे. So what was the value of h square? h square का वैल्यू है u square into 1 plus f1 square. ठीक है, पहले हम देखेंगे कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है. मुझे लगता है यू स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. You divide throughout by u square, so you get h square into 1 plus f1 square kn square minus h into 1 plus f1 square into f1 plus u times f11 plus u into f1 f11 is equal to 0. Okay. अब एच स्क्वायर को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे और एच स्क्वायर है मेरा यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस f1 स्क्वायर. तो एच स्क्वायर की जगह लिखेंगे यू स्क्वायर, फिर आएगा 1 प्लस f1 स्क्वायर, एक ऑलरेडी वहां है, सो कैन राइट f1 स्क्वायर का होल स्क्वायर kn स्क्वायर माइनस, सो h को हम लिख सकते हैं यहाँ पे रूट ऑफ 1 प्लस f1 स्क्वायर और साथ में आएगा u भी right into 1 plus f1 square, square यहाँ